हेलो गाइस, तो ये हमारा बजट गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड। ये कैजुअल 1080p गेमिंग वीडियो एंड फ़ोटो एडिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके पार्ट्स की टोटल कॉस्ट आपको 35K टू 40K लगेगी, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से बाय कर रहे हो। ऑनलाइन काफ़ी महंगा मिल रहा है। तो ये है हमारे पीसी बिल्ड के पार्ट्स। जो केस हम यूज़ कर रहे हैं वो है एंटी स्पोर्ट्स का i100TG। इसके साथ कोई RGB लाइट्स नहीं आती। ग्राफिक्स कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट GTX 1050 Ti 4GB DDR5। हमारे बजट में यही अवेलेबल है क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में किडनी के भाव मिल रहे हैं ग्लोबल शॉर्टेज की वजह से। जो कार्ड आपको सस्ता मिला उठा लो, फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। मदरबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं MSI S310M Pro VDH Plus, सस्ता सुंदर और टिकाऊ ऑप्शन। रैम हम यूज़ कर रहे हैं HyperX 8GB DDR4 2666 MHz। हमारा स्टोरेज कॉम्बो है WD 1TB हार्ड ड्राइव और क्रूशल का 240GB SSD। पावर सप्लाई में हम यूज़ कर रहे हैं Corsair VS500। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा CPU Intel i3 9100F। ये 4 कोर और 4 थ्रेड्स वाला CPU है, अप टू 4.2 GHz इसकी क्लॉक स्पीड है। इसका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो काफ़ी अच्छा है, हमारे बजट में बैठ रहा है। अगर आप Ryzen 5 या i5 PC बिल्ड करना चाहते हो तो आपको अभी रुकना चाहिए, उनके प्राइसेस अभी आसमान छू रहे हैं। ये CPU कूलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ डीप कूल GAMX 200T, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। आप स्टॉक CPU कूलर भी यूज़ कर सकते हो। i3 है तो हीटिंग का कोई इशू होगा नहीं। ये थे बिल्ड के पार्ट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर PC। फाइनली हमारा PC सेटअप कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स प्ले सम गेम्स। Death match. Warm up.
blast off, ka-ching, little skrrr, and we're done. Yeah? Death match. Warm up. Fight. Into the unknown. Enemy down. Gone. We're all. Translocating. No rest for the weary. Damn it. मेरी अगली वीडियो में हम इस पे कुछ और गेम्स रन करेंगे, इस पे और एडोबी प्रीमियर प्रो, फ़ोटोशॉप रन करके देखेंगे उनका परफॉर्मेंस कैसा है। वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।